Hi everyone, thank you for joining our session on insight into strategy consultancy and AI consultancy. For this session, we have Muhammad bin Ahmad from PwC Pakistan joining us. He has he has currently done his master's in data analytics from LUMS, and before that, he has been involved with PwC for the past 6 years and is currently leading the Strategy AI and Transformation team of PwC in Lahore. So over to you, Ahmad, now. So thank you so much, Aisha, for a wonderful introduction. And thank you everyone for joining for this session. And it's a great initiative taken by LUMS for enabling alumni as part of this program, so we can have a discussion session and tell us, where the industry is going, what are the key trends, and how the young graduates can follow moving forward in order to have a successful career in their respective domains. So I'll once again give a brief introduction of myself. So my name is Mohammed bin Ahmad, currently working as a manager here in PwC with 6 years plus of experience. I'm a qualified chartered accountant and also a LUMS graduate in data analytics and AI from STSP. So with that, I'll start. So everyone, before we start, I'll show you a small video and maybe you can have a look at it. So this is one of the snippet of the power of AI. And you all know this is an AI generated video from a VO3 recently, upgraded LLM tool. And you can, see what is the power of AI, and you can compare it with the traditional suits, what usually exist in, in the companies in the fashion sector, and how we can use and leverage these tools in order to enhance our efficiency. And this is just the tip of the iceberg. And we can see how the world is evolving, that in the future, how fast, efficient, and cheaper these technologies will enable us to ensure that the businesses are becoming effective. So this is a introduction and a saying which shows that your imagination is your limitation. Traditionally in economics and what we used to learn traditionally, that we had scarcity of resources, and that used to limit the output with the companies, with the magnates, the professional industries used to have. But when AI is coming in, it's evolving, it's creating change, empowering people. The limitation is in itself in the people itself. That how well you can thought of what you can create. And this is the brief aspect which I'll be explaining moving forward in this brief session as well. That our ability, the cognitive thinking ability, is a really important tool in ensuring how our future will be going, how successful we as individuals and people working in corporates and other entrepreneurs can be moving forward. So remember this, that moving forward from today onwards, using this AI leveraged world, the limitation is your imagination, and there is no such kind of constraints. So to start with, I have a simple question for you, for the people attending this session. How many years did it take for this airplane, this machine, to reach 50 million users? And I want people to kind of reply in the chat so I can see the responses as well. So people, can you give the responses? Aisha, can you help me with the responses? What are people saying? Are there any kind of responses on the chat? No, nobody has right. Okay, so we have Aksa has asked, can you repeat the question? So my question, I'll repeat it again. So in your opinion, how many years did it take for this machine aeroplane to reach 50 million users? So just a wild guess. How many years did it take for this airplane to reach 50 million users?
So anyone, Akib Masood has written 80 years. anyone else? Faisal Any further? Heather 60. Aksa 20. All of the participants, I want it to be interactive, so kindly, jump in the chat, maybe add your input as well. Any further responses? Not yet. Iman has written 30. Zen 10. Zishan 60. So it took 64 years for this machine to reach 50 million users. So now there's another thing which I can ask you. For this machine, many of you are using as well. So maybe if you could again type in the chat, what do you think? How many years did it take for this to reach 50 million users? Any wild guesses? Zen has written 3 years. Zishan 6. Aksa 30. Anyone else want to guess? It's This 12 mobile phone, years. yeah, it took 12 years. So you can see the pattern, how it's moving. And Yes, now for Akib this, was just here. all of you are using WhatsApp as well. So what do you think about WhatsApp? How much time for this to reach 50 million users? Aksa has written 2 years. Zishan 2. Zen 5. Akib has written 5 as well. So this is 1 year. So WhatsApp, when it erupted the social media, it took 1 year for 50 million users. And last year, I have this one thing. Maybe some of you are playing this game. So any wild guesses for this? Aksa few hours. Zishan 1 day. Ali Roman 6 months. Differences of how people think, how changes, occurring fastly. So this is 19 days. So you can see a pattern, how things are moving, how the industry is revolutionizing, it's going fast, and change is becoming faster. So one thing which is quite evident from this is that change has never happened this fast before, and it will never be this slow again. Which means when you see the past, whenever there were changes, they used to be slow, they used to take time. There was a transition period, especially in the manufacturing era, in the industrialization period. However, when the tech sector came into internet came 1980s, 1990s, the processes became efficient, faster. And now with this new evolution of AI, things are becoming faster, which means that the changes which have taken place in the past have been quite fast in the last 5 to 10 years. But in the next decade, they will be the slowest, which means that people need to evolve, people need to learn, people need to adapt as fastly as they can, because that's the way they can, sustain in the market, be sustainable, and are able to, prove themselves. So, how many of the people have heard this phrase that data is the new oil? Can all of you just raise your hands? Aisha, can you tell me how many of them? 5. I'm actually not able to see the comment section. So 5 students have So, raised their hand. so rightly mentioned, this is the saying which most of the people are hearing, directly indirectly these days, that data is the new oil. So why they are saying so? So as I mentioned before as well, oil was the raw material which used to manufacture and which used to earn companies and corporates money. For example, in the post-industrialization period, when ExxonMobil and these big magnates, manufacturing companies, and this was the raw material which led to the manufacture of all these products. And now, if you see,
that as per the S&P top 500 global companies, they're not manufacturing companies, they're primarily tech-based e-commerce giants. And they are using raw data as raw oil, which they are refining into insights and using this as a raw material and establishing those insights, those products, services for the people in generating revenue. So this is the importance of data, how it is replacing the role of the oil in this global economy. And as data, the AI is powering this new system. So based on this oil, this AI will, based on this data, will generate those insights, which will eventually enable those customers, consumers, to generate those insights and services for the people. For example, if you see Netflix, so Netflix is based on this, saying, for example, Netflix has those kind of the viewership records, what we as consumers like to see, whatever we are saying, and that database is the oil, which is the core raw material. And through those LLMs systems, the AI is able to generate those recommendation systems. So whenever you go on Netflix, whatever you're thinking, whatever you want to see, appears on your relevant, portal. It comes. So you're quite amazed at how Netflix as a product knows what you want to see, what in a you are in the mood to see based on the past, whatever you have seen, whether it's movies, whether it's TV shows. So this is how these companies using data as a raw material refining enable to create goods and services for people to generate revenue. And when the revenue has been generated, it's really important to see where the world today is going and how the McKinsey and different companies are able to ensure that they're investing in the right direction, and which is evident from the global economy, kind of the forecast based on IMF and World Bank that AI could contribute more than 15 trillion in the global economy by 2030. And it's much larger than all the European economies. And companies such as Microsoft, who have developed the Copilot, are rigorously investing in those things. And day by day, AI is becoming smarter. Models are advancing rapidly with the rise. If you could see from China, DeepSeek is coming. Those models are becoming cheaper, more effective, and there is rigorous change. And it's really important for us in Pakistan to evolve and adapt as well. And if you see from the AI business predictions on how the C-suite people who are the ones making the changes, making the decisions, they are of the same view as well. And what they are saying, as per a CEO survey, global CEO survey of more than 5,000 global CEOs around the world, that 73% of those executives think that Gen AI will be making changes to the business model. So there will be a total business model reinvention, which means whatever they were doing for the last 30, 40 years may not be that relevant. And this becomes really an exciting factor as well, because there will be change. So it will create opportunity, but at that point of time, it will have certain risks as well. So for us to adapt and cope with the changes, it's really important for us as individuals to make those, to be aware of what's going around the world as well. And Pakistan is a nation which has, stayed usually behind the world. Whatever is happening in the world, Pakistan is usually behind. But now, world being a global village, there's no boundaries. You have all the resources. It's really important for us individual, young generation, to be adaptable and to be in line with what's required for us moving forward. So once you all know that AI has come into place, AI is working, and there's a lot of buzzwords. It's really important to understand the AI roadmap and how do we need to work on this AI. It's not just a buzzword. So we need to have a structured approach in moving forward in order to be successful in our domains. So based on this roadmap, mostly organizations and individuals are at AI novice level, so which is like a beginner level, in which you know all the buzzwords, what is AI, Gen AI, agentics, robotics, those kind of things, and basic understanding. And moving forward to this
inclined towards this roadmap to this maturity level, will be coming a AI pioneer level in which we are industry leaders, and there is continuous learning initiatives, and those initiatives are embedded in our organization wherever we are working. So for us, in order to establish an AI-based journey, it's really important to not fall into kind of hotspots thing. We need to have a structured approach. We need to know where we need to start and where we need to progress moving forward. So the first main aspect where as consultants, as individuals of this young generation, we need to work on AI literacy and education. So we need to know about those core concepts. For example, what is machine learning, what is generative AI, what is robotics, what is an RPA, and there are enormous kind of changes, revamps, models which are continuously evolving. So that kind of literacy and education is really important. Maybe some of you people are from technical backgrounds, so you may know have crossed that step. But in order to have a successful career in consulting in those corporates, it's really important to educate, to create that culture around the people that everyone is on the same page. So that can be a starting point. After that comes this readiness check and strategy based. So once there is kind of literacy, there's education, people know what are the AI fundamentals, what are the benefits, the risks. Only then we can go one step ahead, and which relates to the readiness check of, or for example, an organization, that whether it will be able to adapt to embed AI into its systems. And at that point of time, data being a raw material, it's really important to assess the data, whether in what condition do we have the data, is it structured, unstructured, do we have those kind of data lakes, data warehouses, what is the technology team, is it like uh, cloud based, is it on premise, and what are the people and the governance structure. So is there in place as well, is there a kind of C-suite level involvement as well, and what is the overall culture as well. So based on those things, we get an inherent understanding of an organization, how it's going to work. And based on that, we can deploy and develop that high level strategy, because we'll be in a better position to understand that organization and then identify those use cases based on first the holistic strategic level understanding of where a company will be going, and then moving forward specific to departments. For example, if I'm working in a manufacturing industry and we need to embed AI and we're working on a consultant project, so we need to identify the pain points of specific departments. For example, if we talk about finance department, we could core department from a finance background. So there are certain cases where AI can be used. And then we need to sit with the process owners, have a discussion with them, and identify those pain points. And a use case, an AI use case, can only be an AI use case if it can bring business value. And how business value can be brought in? If it makes the work cheaper, better, and more effective. So these are three domains which enables the work to be and an AI use case to be effective. So that's really important. For example, from a finance point of view, if a person, if you are having a meeting with the board or an audit committee, traditionally there were like 1 to 2 people writing the minute notes. Firstly, they were involved in the meeting. They used to sit in the meeting. Then they took their time, 3 4 hours to draft out minutes of meeting based on a prescribed format. Then that document is prepared, reviewed, and it used to take around 2 to 3 days to prepare the minutes of meeting. But now, if we have embedded AI, so in Microsoft Teams, there is a Copilot already which is available, and that enables to create an automatic transcript which can be embedded into, if you're using a chat GPT enterprise version, based on the predefined format. And within seconds, it creates the minutes of meeting based on your design template and based on the actionables, whatever you want. So there can be numerous hundreds of use cases based on the management requirement, the pain points, what are the manual tasks, where are the inefficiencies. So this is how we work on.
And from starting this and identifying those pain points, then the organization can move up the ladder and go towards the development and deployment of whatever tools they want. Either that they can be on ad hoc basis based on the specific requirement, and moving forward, there can be embedded through the system as well. For example, if a company is using Oracle or is using SAP, so they have their own agentics, own robotics, and embedded AI as well. So whenever the companies are of that maturity, they can work into it and they can, embed those kind of AI agents and AI aspect into their systems as well. So that it can work both ways. And once through this journey, when from the voice you are moving forward towards Vanguard Visionary, the best practice leading practice where there are some of the global giants, which I mentioned earlier as well, such as Google, Facebook. So they are at those level 5, in which they've created an AI center of excellence within their organization, and their organization is embedded through this AI. And there's a continuous learning. They have their specific project management teams as well, which are continuously working and evolving and going forward. So this is an AI roadmap of how an organization or an entrepreneurship company in which you're working, you can start your AI journey and then proceed in a structured way in order to be successful in this transformation journey. So moving forward, I'll just tell you about some of the snippets of the work done, of what I have done being at PwC, of certain use cases which we have developed as well. So the first of all was this rollout of Chat PwC. So Chat PwC being an internal tool, and we being part of PwC have a collaboration with OpenAI. So for our resources, we being operating in more than 3 offices in Pakistan, having 1,000 plus resources. So our UK team had developed this tool, and this consists of all the databases of PwC, the best practices, and this is used by our resources, our consultants, while we are working with different clients. For example, if we need to prepare a presentation, we need to do our research, benchmarking, and I was also involved in the rollout of this chat PwC. So we had these kind of prompting sessions around in Lahore, Islamabad, and Karachi, and we make sure that people are first made aware how to use that. Then we try to show them the skills of prompt engineering, how we need to prompt, how we need to structure our prompts, and then how responsibly we can use AI moving forward. So this is one of the aspect we catered on, starting internally to equip, to empower our employees, our consultants, and then use this kind of benchmarking exercise, benchmarking tool in order to serve our clients. So the next tool which I'll talk about is the demand forecasting model. So here in PwC, I was being nominated as an AI champion, and being a global network. So there were like 1,500 plus AI champions globally around the world. And using that chat PwC internal tool for a manufacturing client, we developed an AI-based demand forecasting model. And there was Python libraries were used, and that model we created around 94% accuracy. And this model was presented on a global AI call, where there were like more than 1,500 people present. So this was also one of the specific use case in which I had worked on. And the third one, which I'll refer and tell you as well, is also a very interesting use case which we worked relating for the public sector, which was an OCR bill scanner. So this was also relating to the public sector, in which traditionally we as a company we worked for the public sector, for the government of Pakistan, to do manual vouching of the of the electricity bills, and we used to match those bills based on the meter reading, which is presented as a picture on the bill, and the meter reading coming on the bill, electronic meter reading. So there used to be differences. So we performed that reconciliation activity, and like traditionally, like if you see 1 year before, we performed this activity, and it took us four of our associates took around 60 days, which means 2 months to perform that activity. And they reconciled around 30,000 of the bills.
But now, being part of this using AI, internally generated tool, we did this activity with an AI generated tool in 6 days. You so that is the efficiency which AI can create whenever you are in our businesses. So it was a great value, greatly appreciated by the client. And moving forward, we are working with more of clients in developing those kind of tools, which bring in this kind of efficiency. So this is a small bit of the work which I have done. So as discussed, based on the upside of AI, which I told you as well, it's really important to use AI in a responsible manner and in a way which is legally and lawfully done. So as an important aspect, many of you know this black box concept. So can you raise hands, people who are present here? How many of you know about this black box? We have 4 people who know about it. Can any one of you unmute and just tell me what it is? Aksa and Faisal, any one of you can Yeah, unmute yourself yeah, and share it. Am I audible? yeah. Faisal, you Hello. can speak. So I think it is essentially the idea that we do not really know what uh, how this code is working and how these neural networks are working. We give input to these algorithms and we tweak it to get our desired results. Yeah, rightly so. So, Aksa, can you add something on that? Aksa, maybe if you can unmute. I think she is unable to. So the black box concept is really important, as mentioned, rightly mentioned by Faisal as well. So we don't know what's happening. And at this point of time, because AI is a kind of a buzz, people are Hello, still, am I audible? yeah, Sorry for yeah. late. Yeah, Aksa. Yeah, okay. So in this black box, obviously there exists some algorithm जिसमें हम input देते हैं जो किसी भी type की हो सकती है, like in the form of audio or in the form of image or in the form of some data, and then there be some model जिसमें वो सारी inputs आती हैं, and then वहाँ पे बहुत सारे different functions होते हैं जिनको हम apply कर सकते हैं. And after processing the data through those functions, उसमें फिर एक like हम error को भी check करते हैं कि error जो produce हो रहा है वो कितना minimum error हम bear कर सकते हैं in output. Then उसके बाद जो final output होती है वो like we get from it. Yeah. It's really important concept. For example, अभी आप लोगों ने you could have seen कि वो जो airline crash हुआ था इंडिया में, एयर इंडिया का. So that's part of the airplane. So it eventually tells कि what was the real reason, what eventually happened. और जो investigations took place, उसमें भी उसके through report आई कि eventually they were saying कि pilots की mistake थी, whatever happened. So AI का भी अभी it's kind of that issue which in हम लोग as users we are inputting ChatGPT enterprise में whatever we are writing and then we are getting the output, but we don't know that what kind of algorithm what's happening in the background. This can be really dangerous. And this point of time because AI is अभी एक evolving stage पे maturity नहीं आई तो उस तरह के अभी governance frameworks अभी तरह से नहीं बने. लेकिन moving forward, this will be a key aspect which needs to be catered, which needs to be taken care of. I'll give you an example, basic example इसमें. So we were having a meeting with one of the CEO, and he was like,
and I was having a discussion with him, and he just told me कि I told him कि for example DeepSeek आ गया और हम लोग इस पे काम करें, we working on it, and he was like कि हाँ जी आप I know this और मैं ये last 3-4 months से use कर रहा हूँ and I'm actually a proficient on this and we don't need any kind of awareness and training sessions. कहते let me show, मैंने कहा sir show me something, तो उसने दिखाया कि these are my financials और based on मैंने input डाला chat GPT पे और based on that मुझे सारे आगे insights आके और based on this for example if you're going I'm going on a meeting with the किसी finance department या उससे meeting कर रहा हूँ तो I Hi, Ahmad, we can't hear you. Yeah, so can you hear me now? Yes, we can hear you now. जी तो इट वाज रियली मतलब मैं काफी अमेज हो गया कि लोगों को भी पता ही नहीं है कि व्हाट कैन हैपन बेसिकली उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था सारा अवेलेबल था और इवेंचुअली उनके कंपेटिटर्स कुड बी यूजिंग दैट डेटा जो कि कितना उसकी वैल्यू होती है फिर उनको आई टोल्ड देम कि प्लीज स्टॉप डूइंग दैट यू कैन नॉट यूज दैट फ्री वर्जन यू नीड टू गेट द चैट जीपीटी एंटरप्राइज वर्जन जो कि आपका एक ओपन एंडेड क्लोज एंडेड होता है उसके अंदर और आप फिर वो इट्स नॉट एबल पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता तो इसके अलावा अभी ग्लोबली अभी रिसेंटली ईयू की कुछ रेगुलेशंस आई हैं एआई एक्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में भी एक एआई एक्ट है दैट्स इन द ड्राफ्ट स्टेज सो पीपल आर वर्किंग ऑन इट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एआई गवर्नेंस बने और किस तरह ये काम किया जा रहा है पीपल नीड टू नो व्हाट आर द डेटा यूज हाउ इट्स यूज्ड व्हाट आर द गवर्नेंस मॉडल्स मॉडल कौन से यूज किए जा रहे हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह काम किया जा रहा है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट एंड मूविंग फॉरवर्ड एज यू सी कि इसमें फाइनेंशियल्स का ऑडिटिंग होती है जो भी फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस हो रही है दिस अ क्वालिटी इंश्योरेंस वेदर इट्स इंश्योरेंस में कहते हैं उसको इसको क्वालिटी एक्सचेंज कहेंगे तो एआई का भी अब इंश्योरेंस उस पे होगी उसके ऊपर भी इंश्योरेंस होगी उसके ऊपर भी काम होगा उसके ऊपर भी सवालिया निशान होंगे तो as users as people who are working in the tech sector business sector it's really important to understand that aspect as well okay what can be the downside of AI and how we can adapt with that. तो उसके लिए भी उसको सीखना उसको अंडरस्टैंड करना किस तरह रिस्पॉन्सिबली उसको यूज करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज वेल so that is like a core thing which we as consultants are also working on our clients also question us कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं what are the governance frameworks rules business rules क्या है जिसकी बेसिस पे आप लोगों को यूज करना है लोगों को एजुकेट करना है तो अगर इसकी यूजेज इसको हम लोग रोल आउट करें तो chaos ना क्रिएट हो इट्स रिस्पॉन्सिबली डन ताकि इट कैन बी यूज्ड इन सस्टेनेबल वे so this is also an important aspect of the topic which I wanted to cover in this session. So moving forward, this is also an important thing I need to discuss today as well. That how you guys being LUMS, studying at LUMS, and inshallah you'll be graduating soon, and some of you maybe have graduated. How you can be part of this AI consulting, AI strategy aspect. So the first important thing which you need to have is business acumen. And me being a project manager and now having a team of around 8 to 10 individuals from the tech sector, tech background. So we have developed this internal team in PwC as well, and with great respect of those individuals, very hardworking, talented. So one thing जो मुझे लगता है कि एक थोड़ा बैकलॉग या थोड़ा होता है from especially tech के जो सेक्टर के लोग होते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी लैक होती है एंड दे यूजली क्योंकि उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है अपने बबल अपने कंफर्ट जोन में यूजुअली काम कर रहे होते हैं तो वहाँ बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं लैक करती है की जाती है and especially if you intend to move from your tech side into this business world into this consulting world so आपके लिए opportunities काफी vast हो जाती है for example you can work in a corporate in industry you can work in a consulting firm you can start your own entrepreneurship business your own venture तो उसके लिए बिजनेस कैसे चलता है बिजनेस की जो रूट है उसको समझना बड़ा जरूरी है और उसके लिए you need to connect with the people people के लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो अगर एक खाने का बिजनेस है, फूड उसका रिटेल उसका बिजनेस है, किस तरह चल रहा है, क्या की प्रोसेस है उस बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल प्रिक्योरमेंट कहाँ से हो रही है, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, लोकली खरीद रहे हैं, हायरिंग किस तरह हो रही है एचआर की, क्वालिटी किस तरह हो रही है जो खाना बन रहा है, लोगों को अगर सर्विस में है तो सर्व किस तरह हो रहा है, मार्केट में प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या है। तो जो भी बिजनेस आप करना चाहें या जिस में जाएं, डोंट ओनली फोकस ऑन योर आउटपुट, जो कि है कि आप लोग ने टूल डिप्लॉय करके डेवलप कर देना सिर्फ बेस्ड ऑन जो कोडिंग आप कर रहे होते हैं। कोडिंग इज जस्ट लाइक अ बेयर मिनिमम। को पायलट, चैट जीपीटी एंटरप्राइज सारी कोडिंग कर देता है। तो दैट्स जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। और आप लोग के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना, जिस तरह मैंने इनिशियली भी कहा कि लिटरेसी और एजुकेशन के बाद आपकी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स, कहाँ इशू आ रहा है, इनएफिशिएंसीज कहाँ पे है, लोगों के पेन पॉइंट्स का है, उनके आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, यू आर नॉट एबल टू work on those projects, on those use cases successfully. So this is very important aspect which as tech, tech individuals you need to cover. And with that comes this soft skill element as well. Because tech people usually working in a closed environment, अपने bubble में होते हैं, तो वो लोगों की जो convincing power होती है, वो जो kind of negotiation skill है, कि लोगों से किस तरह आप लोगों ने बात करनी है, how you need to convince them, what is their expectation, what are the requirements, उसकी understanding, interactions वो limited होते हैं। तो आप लोग के लिए एक ही सजेशन है कि वो आप निकलें बाहर, मार्केट में जाएं, वट एवर इंडस्ट्री वर्किंग, ट्राई टू मीट मोर पीपल, ट्राई टू मीट मोर एंड मोर पीपल। लोगों का परसेप्शन जानना, perspective in life is really important in order to yourself groom yourself, क्योंकि उससे भी आपकी लर्निंग होती है। और इसी के साथ साथ आती है थर्ड चीज, अपस्किलिंग की। या आप लोग एक डिग्री कर रहे हैं LUMS की अंडर ग्रेड की, आज इंशाल्लाह आप लोग ग्रेजुएट भी कर देंगे मूविंग फॉरवर्ड 1 साल में, 2 साल में। तो एआई का दौर अब इस तरह है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे रेगुलरली तो यू विल स्टे बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू माई story, so I did this master's in data analytics, and whatever our instructors taught us may not be relevant in this year, क्योंकि जो भी मैं उन्होंने कोडिंग, फॉर एग्जाम्पल पाइथन कोडिंग सिखाई, एसक्यूएल सिखाया, उससे बेहतर इफेक्टिवली चैट जीपीटी कर लेता है वो आप। लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो केस स्टडीज थी, वो जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी, जो पेन पॉइंट्स थे, वो चीज आपके साथ रहती है। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग राइट एज ऑफ नाउ आज से अपने अपस्किलिंग के, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। फॉर एग्जांपल इफ मैं अगर बताऊं तो मैं आई एम स्टिल सर रिसर्च करता रहता हूँ रोज बैठ के व्हाट्स न्यू। तो मैंने एक नया कोर्स इन एआई स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस पे किया, जिसमें फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू रिस्पांसिबल एआई का पार्ट था कि वे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही है, इंटरनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं, हाउ दे आर इंश्योरिंग कि भाई गवर्नेंस और ये एथिकल रिस्पांसिबल एआई को किस तरह लेके आना है। तो अपने आप को अपडेट रखना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये नहीं होना कि फॉर एग्जांपल मैं डिग्री कर ली एंड दैट्स इट, दिस इज योर डिग्री इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स जस्ट लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके ऊपर ग्रो करना इज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये 3 चीजों के ऊपर काम कर लेंगे, then you will be in a position to be a problem solver. And that is the expectation from a consultant, that how you can be a problem solver to your client. और अगर आपका माइंडसेट होना चाहिए, एंड इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कि आप यू यू आर जस्ट नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करा, यू विल बी लाइक अ ट्रस्टेड एडवाइजर, कि जब भी कोई इशू होगा आपने आना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आके, आपने उस माइंडसेट से आना है कि किस तरह उस प्रॉब्लम से निकाल से आप एक बिजनेस वैल्यू लेके आएंगे। जब आपका माइंडसेट ये होगा, आपके बैक एंड पे वो स्किल्स होंगी, आपके पास वो नॉलेज होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज, यू विल माशाल्लाह यू इंशाल्लाह यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग कि आप लोग वो बिजनेस वैल्यू लेके आ सकते हैं। और कंसल्टिंग में वेदर इट्स एआई, वेदर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, whatever work you're doing, you'll do wonders if you're able to cope up with these things moving forward. So with that, I'm going to stop my brief session. काफी लंबा सा हो गया, and I guess we can start with the question answer session. जो भी आप लोग की queries हैं, जो भी एक सवाल आते हैं मेरे से हैं, we can have a open discussion and see how it goes.
Hi everyone, I've enabled your mics. So if anyone has any question, feel free to unmute yourself and ask the question. Or if you want to write them in the chat box, you can write it over there as well. Yes, Aksa, please go ahead. First of all, this was very informative session. एंड आई हैव वन क्वेश्चन आप मार्केट में है इस वक्त अमाल तो प्लीज टेल अस के जब अगर किसी जॉब पोस्ट में ये वाली चीज़ मेंशन की होती है कि आपको एआई को यूज़ करना आता हो एंड आप एआई मतलब आपका जो सॉल्यूशंस हैं वो एआई ड्रिवन होने चाहिए तो उसमें वो किस हद तक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लाइक जस्ट यूजिंग द चैट जीपीटी एंड इस तरह के जो डीप सीक और इस तरह के जो मॉडल्स हैं इनको या इससे कुछ फर्दर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं So it, Amarth, we can't hear you. hello. Hi, yes, we can hear you now. Now you can hear me. So अक्सर आपका जो क्वेश्चन था उस प्राइमरीली था कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है मार्केट में जब फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब में जा रहे होते हैं वो तो उसमें मैं आई वुड लाइक टू से कि इट वेरीज एक्चुअली सो डिपेंड्स ऑन किस सेक्टर में आप जा रही हैं फॉर एग्जांपल इफ यू सी पाकिस्तान सो उसमें देयर लाइक there is the tech sector which is usually which you can say it's like more mature industry और उसमें there is काफी तरह developments हुई हैं people are on the you can say developer pioneer stage so वहाँ पे based on the requirement आप for example किस role या किस उसमें जा रहे हैं तो that really varies काफी वेरी करता है लेकिन if you're coming for example किसी manufacturing या service industry में आते हैं वो अभी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं in the learning stage तो उस केस में ये होता है कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल अगर एआई के मेन बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर एग्जांपल फेट आउट मैं दोबारा से रिपीट करूं मशीन लर्निंग का है जनरेटिव एआई का है इसमें डीप लर्निंग भी आ जाता है फिर रोबोटिक्स एजेंटिक्स आरपी उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो देन दोस एलएलएम मॉडल्स उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्टिंग इज स्किल जो कि लोग हर कोई कह रहा था कि वी नो लेकिन दे डोंट क्योंकि उसकी प्रॉपर टेक्निक्स हैं जो सीखनी जाती हैं एंड देन रिस्पॉन्सिबली किस तरह यूज करना है सो एट योर डिस्पोजल पर्सनली जितना आप उस पर काम कर सकती हो रिसर्च कर सकती हो अपने आप को उतना अपस्किल करो एंड बेस्ड ऑन के जॉब की कितनी एक्सपीरियंस जॉब मांग रही है बेस्ड ऑन दैट यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू सक्सीड इन ऑर्डर टू गेट द जॉब Ji, Faisal, you're up Assalamualaikum. next. Can you hear me? yes जी शान So my question was coming from a purely technical background. How would मतलब कि how would what recommendations would you give for us to build a business acumen? So just For just tell example, me, yeah. So in which year are you, Faisal? In which year? no, this is Zishan. Faisal hasn't asked Oh, his question yet. okay, sorry. So, Shan, can you tell me in which year you are right now? It's been 4 years since I graduated from a bachelor's of computer sciences, and I've been working as a software engineer for the past 3 years. And for the past 6 months, I've been trying to dabble into project management. And yeah, a business acumen is one of the things that I'm lacking, that I find lacking in myself. I can't progress completely from a technical background to a project manager sphere. Yeah. This is बड़ा अच्छा question है usually जो based on the discussions I've had with tech people especially जब वो initially they get good starting point but जब वो mid level position में आते हैं तो when we need to develop as a manager as a senior manager so उसमें काफी hindrance आता है क्योंकि eventually initially you'll be starting doing the codes doing those things but like in 3 to 5 years you'll be the one managing people managing staff तो फिर जो टेक्निकल साइड है इट्स लाइक 20-25%
and 70-75% is people managing आपकी emotional intelligence कैसी है, how you're able to negotiate. तो इस केस में I can give you like 2 suggestions, especially for people जो कि अभी graduate हुए. It's really important कि during your LUMS give us different of various opportunities, and people काफी लोगों ने reach out भी किए हैं, तो try to go and opt for internships and try to not only go in the tech side लेकिन business किसी industry में जाके try to work like 6 weeks 8 weeks, try to interact with people. क्योंकि सबसे बड़ा issue ये आता है कि वो deadlock होता है, usually tech people जो है वो work from home कर रहे होते हैं, बस अपने काम पे फोकस होता है, तो आपका इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से, तो वो एक बड़ा चैलेंज आता है. तो दिस इज लाइक सजेशन फॉर पीपल जो कि अभी अभी जो ग्रेजुएट नहीं हुए, और आप जिस तरह बता रहे हो कि लाइक मोर देन 3 years वर्किंग इन अ टेक साइड, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप भी इसी तरह ट्राई टू अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू विल बी बिजी इन योर जॉब, और अगर आपने हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो अब आपकी जो मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तरह की प्री रिक्विजिट बन जाएंगी. तो अभी ट्राइड फॉर एग्जाम्पल वेर एवर यूर वर्किंग इन अ कंपनी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि आपका इंटरेक्शन लोगों से किस तरह ज़्यादा होता है, क्योंकि और इफ यू वर्किंग इन अ टेक साइड क्लाइंट्स के साथ डू डिस्कशंस, पूछो फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे बताओ कि व्हाट प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन, क्या काम कर रहे हो आप. Acha, so most recently the product I was working on was it was a health tech startup जहाँ पे basically अमेरिका की rigorous documentation services को their क्या कहते हैं it's process that take a nurse 45 to 50 minutes per patient, so we're reducing that time through AI to almost 5 to 10 minutes. So that was the product that I was most recently working on. ओके, इस पे इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लाइंट के साथ रैपो डेवलप करो. और फॉर एग्जांपल देयर विल बी अ टेक टीम, देन देयर विल बी अ बिजनेस डेवलपमेंट काइंड ऑफ टीम, या जो क्लाइंट डीलिंग करती है. तो ट्राई टू अपने फॉर एग्जांपल क्लाइंट पे और अपने जो आपके सीनियर्स उनसे डिस्कस करो जाके, हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्वड इन दोस मीटिंग्स एज वेल. So that can be a starting point for you. For example, a person is working like 3-4 years. So this is, you need to take initiative. Initiative is a thing, क्योंकि क्योंकि वो इनिशिएटिव आता नहीं है, आप अपने डोमेन से निकलते नहीं हो, तो वेर एवर यूर वर्किंग यू नीड टू डू दैट कैन बी वन ऑफ सजेशन. अदर देन दैट, रिसर्च एंड काइंड ऑफ वट एवर अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड. तो आप फॉर एग्जांपल अगर लम्स है या कोई और बिजनेस स्कूल है, कोई फॉर एग्जांपल समर प्रोग्राम है, कोई इवनिंग सेशन है, कोई कोर्स है जिसमें डिफरेंट आपके बिजनेस साइड के लोग आ रहे हैं, लम्स के साइज प्रोग्राम होते हैं, फर्दर डिफरेंट अदर थिंग्स हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करो, उधर आप अप्लाई करो, और ट्राई टू इंडल्ज विद पीपल. जितना लोगों से मिलोगे, लोगों का पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप अपने बबल से बाहर निकलोगे, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, लोग क्या कर रहे हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं. तो इधर से आपका जो है ना एक्सपीरियंस ड्राइव होते हैं, और इवेंचुअली एट मैनेजरियल लेवल पीपल जो सी स्वीट है, दे वांट दोस पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, देन दे वर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, सो दे वर एबल टू मैनेज दोस प्रॉब्लम्स. और जो आगे फर्दर इंटरव्यूज भी होंगे, दे प्राइमरीली डिस्कशंस विल बी अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के व्हाट वर द चैलेंजेस, हाउ डिड यू रिजॉल्व. टेक्निकल चीजें नहीं लोग पूछते आगे. सो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, सोचो उसको और देखो आगे किस तरह इसको लेके चल सकते हो अपने में. अभी जस्ट स्टार्ट, अभी अभी 3 years हुए हैं, एंड इंशाल्लाह यू कैन मूव इनटू दिस फील्ड व्हाटएवर यू वांट. Jazakallah for the response. सो Thank yeah, you, yes, Zafar. question. Now we Yeah, have yeah. Faisal. Hi, Faisal, Aman. okay. Hello Faisal, how are you? I'm good. Thanks for the great session. Salam. I just, I Sir, just want to, my name is Yahya. I have a question that is, so I just want to confirm that you mentioned that one should be a problem solver. Uh, Everyone mentions it like you should be a good problem solver, but to really become a good problem solver? Like we do projects, we engage in discussions. Like what is the roadmap to it? Like जनरली क्या हम बन जाते हैं एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, या फिर हमारा तरीका होता है प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का जो हमें अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है? लाइक हाउ डू एक्चुअली बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर? So as I mentioned in the slides as well, so there are 3. 1, सबसे पहले as I told before as well, business acumen, क्योंकि there are issues
and then there are the solutions. So जो business sense होती है ना for a developer, वो बहुत important है. For example, जो भी आप कोई काम कर रहे हो, you cannot just develop अपने tech expertise लेके कि मैंने code डालना है. वो mindset होना चाहिए कि you will be solving a business problem, you will be creating value in terms of tangible benefit होगा उस चीज का. तो जब वो mindset होता है ना वो, तो फिर वो आपका output भी नजर आना शुरू होता है. उसके साथ I told you two things कि फ्रॉम टेक साइड, क्योंकि आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हो, तो वो सॉफ्ट स्किल्स उस तरह पॉलिश नहीं होती कि आपकी वो लोगों से निगोसिएशन स्किल्स, आपकी किस तरह आप लोगों से डिस्कस करते हो प्रॉब्लम्स, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, क्या हो रहा है मार्केट में, पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मे नॉट बी एबल टू नो दैट एज वेल. सो वो चीज सेकंड थी. और थर्ड थी फिर अपस्किलिंग वाली कि किस तरह आप मार्केट के ट्रेंड्स में ग्लोबली क्या हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आपकी इंडस्ट्री में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, अगर इफ आई डोंट नो कि चैट जीपीटी रिसेंटली वो दे हैव लॉन्च देयर एंटरप्राइज वर्जन के बाद एजेंट लॉन्च कर दिया है, तो आई नीड टू नो कि चैट जीपीटी के नेक्स्ट 1 ईयर में डेवलपमेंट्स क्या होंगी. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग दो सर्विसेज, आई नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द पीपल ना. आई नीड टू नो व्हाट दे आर डूइंग, और फिर मुझे उसके लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी है, अपने आप को अडेप्ट करना है. तो जब मेरा माइंडसेट वो होगा ना कॉन्टिन्यूस लर्निंग का, जिस तरह आई टोल्ड यू कि एआई में भी देयर इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इवॉल्व कर रहा है, इंप्रूव हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, तो आपका माइंडसेट भी वो होना चाहिए. वट एवर जॉब यू आर डूइंग, वट एवर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट, और माइंडसेट से फिर आउटपुट ड्राइव होता है. तो दिस इज द बेसलाइन थिंग. आपने आज बैठना है, आपने अपने आप को असेस करना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, कोई टेक बना रहे हो, तो क्या फॉर एग्जाम्पल अगर बेसलाइन काम करना चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टास्क है, मैंने इतना ही करना है, उस बेयर मिनिमम से यू नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम बेयर मिनिमम. यू नीड टू सी कि वैल्यू एडिशन आप किस तरह कर सकते हो, इनिशिएटिव किस तरह लेके आओगे, और हाउ यू कैन बी the different one from the people around working in that working environment. So that uniqueness you need to develop in your sense. तो पहले वो आपके अंदर एज इंडिविजुअल आपके अंदर एक वो इनिशिएटिव ड्रिवन थिंकिंग जो है ना, वो एक माइंडसेट आएगा, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डिलीवर इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड. Thank you, Ahmad. So now we have Yaya, Habib. We have Akib Masood and then Yaya. Okay. Ji, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes. Walaikum salam, Akib. Okay. So thank you so much for the session. It was very insightful. Sorry we were not responsive enough. My introduction is that I just did my MBA from LUMS, and I started my job in consulting. I'm working with Intelia. So I noticed that during your career, you also transitioned from like associate and finally going to like in the field of AI. So, and as we know that the consulting industry is right now being affected by AI like no other industry. We saw like layoffs by major players. Recruitment may like they're not recruiting as much as they used to, and the fundamentally how they used to do research and their business is in fact changing. So, first of all, like, what do you think about this change that is coming in consulting with AI? And secondly, what would your advice be to someone who is like willing to go in this field in the future? What sort of skills do they need to know? And do you think that in the future demand सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी in the consulting industry which are able to use AI other than like do good research, slides making वगैरह, but उसके अलावा the people who are able to utilize AI? So yeah, that's my two questions. So thank you very much, Akib. So आपका जो first question था relating to layoffs. So काफी बड़ा concern है globally. जितने big three whether consulting firms हो, audit firms हो, huge number of layoffs. और eventually जब भी technological change आता है तो ये सबसे बड़ा impact पड़ता है. और अगर आप कुछ इसका analysis करो, if you see, तो companies usually फिर workload analysis सारा करती हैं जब भी ये layoffs करने होते हैं. So those people जो सबसे slow थे responsive to change, who are unable to adapt, are the ones जिनका layoff सबसे पहले होता है. तो ये तो एक फिनोमिना इंटरनेशनली इसके ऊपर काम किया जाता है. और ऐसा टास्क, और अगर आपके अंदर एज एन इंडिविजुअल कोई यूनिकनेस, कोई वैलिडेशन इनिशिएटिव नहीं है, तो फिर इस तरह बहुत होगा. मैं आपको आई गिव यू ए क्लियर एग्जांपल. इन पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनली, सो अराउंड इन 2024 30,000 लेऑफ्स हुए थे, और उसमें से
around 24,000, which means 80% of the layoffs were in the audit department, assurance department, which is the compliance department. और compliance department वो होता है जिसमें bare minimum scale आप लेके आते हो as an auditor, आपकी कोई assets relevant for example standards की आप उसके ऊपर audit report दे रहे होते हो, और वो काम अब टेक्नोलॉजी ने आके उसको इतना empower कर दिया, उसको इतना फास्ट कर दिया. लेकिन फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट फील्ड्स थी, जो हमारे डिफरेंट डोमेन्स थे, फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टिंग में, या जहाँ पे ह्यूमन इंसाइट या जिसमें आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे थे, उन जॉब्स में ले ऑफ्स पर रिलेटिवली लेस. सो एज अ लेसन लर्न उसमें यही होता है कि आपके पास स्किल सेट क्या है. और आपका जो दूसरा सवाल था उसमें यही बात हो रही थी कि किस तरह आप इस जो टेक्नोलॉजिकल जो इतनी रिवैम्प एक डिस्ट्रप्शन हो रही है उसमें किस तरह इवॉल्व करोगे. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अप स्किलिंग अपने आप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआई के साथ जुड़ जाना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इन कंसल्टिंग. सो वेदर फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन योर एमबीए, और मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे होगे कि जो कोर्सेज और जो आपको चीजें सिखाई होंगी इन दोज कोर्सेज मे नॉट बी रेलिवेंट इन द मूविंग नेक्स्ट 6 to 8 months. चेंज इतनी फास्ट हो रही है, और जो चीजें मैनुअली करोगे वो ऑटोमेटेड हो रही हैं, वो थ्रू एआई हो रही हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है. सो यू नीड टू सी कि कौन से ऐसे मैनुअल टास्क है आपके डेली लाइफ में जो दे आर बीइंग डन बाय एआई. रिसर्च दोस टूल्स, अपने आप को एफिशिएंट बनाओ, एंड देन यू शुड स्पेंड योर टाइम इन दोस एक्टिविटीज जहाँ पे आपको ह्यूमन ब्रेन जो कॉग्निटिव थिंकिंग से डिस्कस करते हैं, जहाँ पे इंसाइट, उस डेटा में से इंसाइट निकालना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, एंड इवेंचुअली थ्रू दोस्त आप लोगों ने वो चीजें प्रेजेंट करने, लोगों से इंटरेक्ट करना है. क्योंकि एआई जितना भी आ जाएगा, इट कैन वर्क एज अ बैक एंड पे काम करेगा. फ्रंट एंड पे जिस तरह आई टोल्ड यू कि ह्यूमन इंटरेक्शन, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज, हाउ यू एबल टू सेल टू योर क्लाइंट, टू योर पार्टनर्स, उसमें एआई वोंट बी कमिंग एनी फ्यूचर. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एजेंट्स पे बात हो रही है, लेकिन एवेटार्स पे भी बात हो रही है, लेकिन इट्स अ लॉट टाइम कि वो इधर आके डेवलप होंगे. सो यू नीड टू फोकस ऑन द सॉफ्ट स्किल्स कि हाउ यू एबल टू मैनेज दैट. और इंशाल्लाह अगर आप उस पर कर रहे हो, आप स्किलिंग भी कर रहे हो, और you have that uniqueness in yourself, so माशाल्लाह there's a long way to go. और although AI आ रहा है, वो जॉब्स भी जा रही हैं, लेकिन मार्केट में बिजनेस भी उस तरह बढ़ा है. इनिशियली देयर विल बी सम लेऑफ्स, लेकिन फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस आपकी आपकी जो है कहते हैं केपीआईज अकॉर्डिंगली शिफ्ट होंगे. अभी एक वो डिलेमा सा है, लोग फंसे में, दे डोंट नो हाउ टू अडैप्ट देमसेल्व्स, लेकिन लाइक 3 to 4 years में चीजें फॉर्मलाइज हो जाएंगी, और फिर एक डिफरेंट सा वर्ल्ड होगा. आपकी जेडीज फर्क होंगी, आपकी केपीआईज फर्क होंगे. सो इट विल बी क्वाइट चेंज. तो इट्स बेटर कि आप being a reactive thinker, be a proactive one. So जितना जल्दी इसमें adapt करते हो, अपने आप को रिसर्च करते हो, you'll be in a better position to succeed inshallah. Thank you so much, sir. Hi, yeah, now it's your turn. Assalamualaikum, sir. Sir, based on that last discussion, last Q&A, एक क्वेश्चन थ्योरी मेरे जहन में ये राइज होती है कि जो होते हैं लेऑफ्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, बट एंड इस तरह से ये भी हो रहा है कि इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री आपकी जो जूनियर डेवलपर्स हैं ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं. एज एम्प्लॉयर्स की ये थिंकिंग आ गई है कि आपका जो ज्यादा काम है, बेसिक टास्क एआई भी आपका कर सकता है, बेहतर भी कर सकता है, एंड दैट फॉर फ्री. तो इस तरह से तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये हो रहा है कि जो जूनियर पोजीशंस हो रही हैं ये कोलैप्स होती जा रही हैं. हेलो. हाँ जी. Is this Yaya? यस, दिस इज Yeah. So Yaya बिल्कुल rightly mentioned. So बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि वो जो बेसलाइन कोडिंग थी, बेसलाइन चीजें थी, जो कि रिगरस मोनोटोनस टास्क, मैनुअल टास्क थे, वो सारे ऑटोमेट हो रहे हैं, और इवेंचुअली पीपल आर फेसिंग दैट चैलेंज. और इसमें एज ए टोल्ड यू, इसलिए मैंने आपको बताया कि अब इवेंचुअली जेडीज और केपीआईज कंपनीज में चेंज होंगे, विच मीन्स जो उसका बैकएंड होता है वो होता है, क्योंकि सारे आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू. तो इसमें अब यूनिवर्सिटी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इसका बहुत रेलिवेंट रोल है कि किस तरह कोर्स करिकुलम्स में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंगली. क्योंकि जो पढ़ाया जाता है, इट मे नॉट बिकम दैट रेलिवेंट. सो ये स्ट्रक्चरल चेंज है
which may take 3-4 years, क्योंकि जब eventually आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से जा रहे होगे और वो चीज़ इज नॉट रिलेवेंट इन द मार्केट, फिर लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो वो साइकिल जब एक विशेष साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर इवेंचुअली एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा जिसमें यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी कोर्सेज ऑब्सोलीट हो जाएंगे, नए कोर्सेज आएंगे, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनको भी अपने नॉलेज बेस रिवैम्प करनी पड़ेगी। तो इसमें एक तो स्ट्रक्चरल चेंज इट मे टेक टाइम, एज आई मेंशन कि 3-4-5 years लग सकते हैं, स्पेशली कमिंग पाकिस्तान तक आते हुए। तो इंडिविजुअल लेवल पे यू नीड टू सी कि वेयर द मार्केट इज गोइंग। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू नो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कोडिंग परस्पेक्टिव, कि अब तो बेसलाइन कोड जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं बिजनेस एक्यूमेन का मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, मैं पूरा डिमांड मॉडल पाइथन की लाइब्रेरीज पे विदाउट एनी कोड अंडरस्टैंडिंग मैं बना सकता हूँ। और ट्रेडिशनली पाइथन पे वो करते हुए इट यूज टू टेक मी लाइक 3-4 days लग जाते थे। तो वी नीड टू सी के इफ वी नो द बेयर मिनिमम वेयर वी नीड टू स्टार्ट, हमने अब कहाँ जाना है, हमने कौन से ऐसे टास्क हैं जो एआई नहीं ठीक कर सकता, हाउ टू इंटरेक्ट विद एआई। अगर एआई बेसलाइन कोडिंग कर देता है तो उसमें से इनसाइट्स किस तरह लेके आनी है, बिजनेस वैल्यू किस तरह ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंस आती है कि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हाउ यू विल एबल टू सेल योर सेल्फ। तो इसलिए you need to start working on that, और until then क्योंकि फिर भी as I mentioned before as well कि it will take like 4-5 years for that structural change coming as a whole in the economy, where the courses वो सारा dilemma change होगा eventually, वो फिर translate होगा कंपनीज में, उनका स्ट्रक्चर सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में drastic revamp आएगा। सर ऑल्सो गेम मैं इंडस्ट्री में भी हूँ फॉर अराउंड 2.5 years। मैं ओडो डेवलपमेंट में काम करता हूँ। आई वर्क इन ओडो डेवलपमेंट, दैट इज कस्टमाइजेशन पे काम करता हूँ मैं कंपनीज के लिए इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। तो ज़्यादातर जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये बेसिक बहुत वो होती हैं, मिनिमल होती हैं। दैट इज फील्ड ऐड कर दो, रिपोर्ट्स बना दो, एंड आपके प्रोसेस फ्लोज थोड़े से चेंज कर दो, ऐसे होते हैं लेकिन टिपिकली। तो ये majority of them AI कर लेगा ये in the near future। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है, टोटली एग्री विद यू। इन कंसल्टिंग इवन बेसिक प्रेजेंटेशंस बनाना, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस करना, तो एआई कैन डू दैट। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फिर आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा ना, कौन से ऐसे टास्क है विच द एआई कैन नॉट डू। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसकी। सो रिसेंटली वी वर वर्किंग ऑन अ क्लाइंट, तो हम लोगों ने उसका एक रिस्क रजिस्टर, वी हैड टू मेक दैट रिस्क रजिस्टर। तो जिस तरह मैंने बताया कि पहले मीटिंग्स होती थी, फिर मिनट्स बनते थे, फिर प्लेट बनता था, तो थ्रू दैट मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट ऑटोमेटिकली रिस्क रजिस्टर डॉक्यूमेंट बन गया, विच वर एज ए केपीआई, जो मेरी टीम का केपीआई था कि रिस्क रजिस्टर बनाना। अब जो एआई बेस्ड जो आया है रिजल्ट, अब माई टीम मेरी से अब ये मेरे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसमें से आप लोगों ने एआई से किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह आइट्रेशंस करनी है, और उसको बिजनेस वैल्यू लेके आनी है उस चीज में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिस्क रजिस्टर, अगर एक बंदा उसको फॉर एग्जाम्पल 6 days लगते हैं बनाने में, अब थ्रू दिस एआई वी कैन मेक दैट रिस्क रजिस्टर इन 3 hours, which means कि efficiency more than 300% increase होगी। तो विद इन डे, if he's using AI, he can make develop those 3 risk registers. तो आपके काम में भी अब इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वट एवर वर्क यू वर डूइंग इन 1 month, आपको जो टास्क मिलते हैं यू कैन नॉट डू इट लाइक 3 to 4 days। तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम जो है ना, ज्यादा काम कम टाइम पे हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कैन यू कैन क्रिएट वैल्यू फॉर द क्लाइंट। मे बी यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। पहले आप बैक एंड पे एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं, आप एट द सेम टाइम 3 क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, और एआई को यूटिलाइज करके, क्योंकि उसके अंदर भी उसके आपको मैंने बताया कि लूप होल्स होते हैं, उसकी भी डाउन साइड है। तो उसमें आइट्रेशंस करना, उससे कनेक्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अपनी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके आप एक डिफरेंस लेके आ सकते हो। दिस इज वन ऑफ द सजेशन आई कैन गिव इट टू यू। सर तो इस केस में जो है बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मैटर कर जाएंगी मोर देन हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि डेफिनेटली। एआई एआई में कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर करती है। कि आप चैट जीपीटी को अगर आप इतना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और डेफिनेटली क्लाइंट फेसिंग में भी कम्युनिकेशन ही होती हैं, मैटर करती है। बिल्कुल इसी तरह। तो जिस तरह मैंने एक रोड मैप से बनाया था उसमें वो तीनों एस्पेक्ट आ रहे थे,
चैट जीपीटी के साथ यू नीड टू इंटरेक्ट. फॉर एग्जांपल कंसिडर एज योर, उसको ऐसे कस्टम जीपीटी बना के अपना एक एडवाइजर बना दो, उससे इंटरेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल वट एवर आउटपुट दे रहा है उसको रिव्यू करो, उस चीज को, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना. तो कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट भी लगेगी. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जीडी में लाइक 2 years बैक पहुंचता कि आपने कोड जनरेट करना है उससे. अब आपकी जीडी में होगा, सो वी, आप फॉर एग्जाम्पल एज एन एसोसिएट का काम था कोड जनरेट करना. अब एक एसोसिएट का काम होगा कोड रिव्यू करना. सो बेसिकली जो कोड जीपीटी में आया है उसको रिव्यू करके आपने प्रेजेंट करना है. तो एज आई मेंशन कि जेटीज और केपीआईज में दो चेंजेस आएंगे इवेंचुअली. तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है. तो फॉर एग्जाम्पल आपका मैनेजर, आप कोड बनाते थे, मैनेजर आपका कोड रिव्यू करता था, आपको 2 दिन लगते थे, मैनेजर घंटे में देख लेता था. अब यही हो रहा होगा, तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिव्यू. तो आपको वो जो कोड वो बना रहा है घंटे में रिव्यू करना पड़ेगा, विच मीन्स कि 4 दिन में मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ 7-8 क्लाइंट के कोड्स बैठ के देखने पड़ेंगे. तो इस तरह की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चेंजेस आएंगी इवेंचुअली मूविंग फॉरवर्ड. सर, तो इस तरह से अगर एआई आपकी ज्यादातर आपकी जॉब में अच्छी खासी असिस्टेंस कर लेता है, तो इस तरह से तो ये मीनिंग भी मिल जाता है कि आपकी वैल्यू भी एक तरह से रिड्यूस हो गई है. वैल्यू डेफिनेटली दोज पीपल हु आर अनेबल टू अडेप्ट. और वो क्योंकि जब चेंज आता है तो फिर यू नीड टू अनलर्न एंड रीलर्न. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो देन इट कैन बी रियली क्रिएट chaos फॉर यू. तो उस केस में डेफिनेटली काफी लोग जॉब्स लूज करेंगे. लेकिन द वंस वर एबल टू अडेप्ट, एबल टू इवॉल्व, तो वो दे कैन मूव अहेड. और वो मार्केट में दे कैन बी द प्रोडक्टिव पायनियर्स. तो मार्केट में डिसरप्शन होगी काफी ज्यादा, और ऑलरेडी हो रही है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू द वंस टू बी द वंस जो कि प्रोएक्टिवली इसको लेके, इसको पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं. सर, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि लेट से आपका जो काम होता है टाइम लेता है, टाइम कंज्यूम करता है, तो उस हिसाब से कोई अच्छे ऑल्टरनेटिव भी नहीं होते थे बिफोर चैट जीपीटी. वो वरना लोग डेवलपर्स टिपिकली वहां पे रिलाई करते थे, स्टैक ओवरफ्लो, डिस्कॉर्ड, अदर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स में रिलाई करते थे. जब से चैट जीपीटी आया है, आपका काम सारा एक जगह सेंट्रलाइज हो गया है. तो जो है एम्प्लॉय काम जल्दी हो रहा है, तो एम्प्लॉयर्स का भी ये होता है कि आपकी इतनी एफर्ट नहीं लग रही. बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग भी होती है कि कितने लाइंस ऑफ कोड के आप करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है. पर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि जो आप लोगों की कंपनी वाइज जेडीज और केपीआईज और किस तरह उसकी कॉस्टिंग को मैनेज करना है, वो इवेंचुअली इज स्ट्रक्चरल चेंज. और उसमें इवेंचुअली कंपनीज अभी काम करना शुरू करेंगे उस चीज को. तो लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को किस तरह ग्रो करने की कोशिश करते हो, इवॉल्व करते हो, और इसमें मैंने प्रोएक्टिवली सोचते हो इस बारे में. तो डेफिनेटली डाउन साइड भी है, अपसाइड भी है, अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आते हैं साथ. और मार्केट इसी तरह ही, जब वो इंटरनेट रेवोल्यूशन 1980 90s में आई थी, उसने भी आके इस तरह डिस्टर्ब किया था मार्केट. तो आफ्टर दैट अगर आप उसको रिसर्च करोगे तब भी यही सारे इश्यूज आए थे. और लेसन लर्न से द पीपल्स हु वर एबल टू इवॉल्व, कंपनीज जिन्होंने इवॉल्व किया. तो इसीलिए कंपनीज अब हमारे पास एज कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं कि वी नीड टू एस्टैब्लिश एन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि भाई हमने अपनी, हमारी वर्कफोर्स है 1000 बंदा है, 1200 बंदा है, किस तरह इसको लेके चलना है. हम इस तरह नहीं कर सकते कि इफ यू वर्कफोर्स ऑफ अराउंड 1000 पीपल, हम 600 बंदा निकाल दें. किस तरह उस चीज को रिवैम्प करना है. सो दिस इज हाउ द मार्केट विल गो मूविंग फॉरवर्ड. ओके सर, तो एट द एंड ऑफ द डे के ज्यादातर आपके वही वही सॉफ्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स विल मैटर एट द एंड. Definitely. The core skill will be like a bare minimum starting point, and then eventually you need to grow on your soft skills. The power of negotiation, how are you able to convince people, how are you to interact with them. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving your time. Thank Thank you you so for much. having me. Thank you so much. Thank you, Yaya. Fatma, you're up next. Sure. Am I audible? Yes, you are Fatma. Okay. Assalamu alaikum. First off, thank you so much for your amazing session. To introduce myself, I'm Fatma. I'm a fourth year accounting and finance student at LUMS. And as for my work experience so far, I've interned with PwC in their audit department, and I'm currently interning at packages in their finance department at DIC.
As far as I've noticed, and you also advised as well, that one should do internships and get to experience what real business problems are like. So far, what I've noticed is that in these kind of positions, you only get to experience the operational side of the business rather than understanding the strategy and like the bigger side of it, right? So, what would be your advice to someone who wants to move to consulting? What kind of projects or what kind of skills would you recommend focusing on to break directly into a strategy focused role after graduation? Thank you so much, Fatma, for your question. So this question is usually asked by the people who are graduating. So as you rightly mentioned, so you've done great. Mashallah, you've doing internships. You've done internship at PwC as well, and now doing it packages as well. And definitely, when you are an intern, you're being involved with the process level teams. You're able to interact with people. As I mentioned before as well, you're able to discuss the pain points. What are the issues? And once you get that baseline understanding, only then you'll be able to understand the strategic aspect of that level. So that core understanding, being at the forefront, people around, it's really important. For example, if you're at packages at DIC, so you'll be knowing that DIC was one of my clients, my first client when I started working in 2019. So you need to understand the business model. For example, how they are importing ink, who are the clients, and based on that understanding, what is the process, what are the customers, are the customer like intercompany customers, what is the process of generating ink, how the ink colors are mixed. So once you're able to understand that process, only then you will be able to understand the strategy of that company. For example, in the next 5 years, what is the strategic plan for DIC? How they'll be like able to expand themselves, whether they'll be like exporting, whether they'll be going to newer products. So from coming from the level you are working right now, so operational understanding is really important. And the second aspect was relating to what skills are required when if you need to get a job in consulting wing. So as I mentioned before as well, so those three skills: business acumen, which you have been working around Lahore, that's good thing. Soft skills, how you're able to communicate, how you're able to sell yourself, and how you're able to create a uniqueness in yourself. What's the unique selling point in yourself, which no one around has? Whether it's like maybe some kind of ability you have, maybe some skill, maybe some technical skill, maybe your expressive, convincing power, anything whichever you have developed over time, that can be one of the key aspect whenever the C-suite level, the partner level interviews, which whenever you're taking place. And thirdly, the problem solving aspect, so which you need to develop. So try to delve into, maybe you can research, for example, the consulting firms, what sort of questionnaires, what sort of the uh, interview case studies they have, which you already doing in LUMS as well. So that empowers you, it broadens your horizon, your mindset on what are the issues which arose and what was the solution. So problem solving at its core is the eventual thing which we are looking for. Thank you so much. Another question that I would want to base off of what you just said is, obviously when you're graduating your internships matter, but would you say that considering the way things are moving forward, everything is changing very drastically and rapidly, would you suggest pursuing personal projects on the side as well, so that you can do more work which is relevant? Because obviously you're getting the operational side in your internships, but would you recommend pursuing projects on the side as well, so that you can show those as your skill set when you are going into the market finally? Definitely, for sure. And as someone mentioned, we are having a discussion. So due to this AI, now processes, for example, the code drafting is becoming efficient. So now you can multitask. And this is a unique ability and skill you need to develop, especially when you become project manager and those kind of things. So students who are working, they're doing projects, some entrepreneurship thing, some different venture. So it's greatly appreciated. So definitely all of you, whoever is studying, whoever has some free time, it's great to try out, adventure out, go into people, meet people, and learn from your mistakes. And then, only then you will become a problem solving. Now you need to first fail, need to learn, and then grow.
Thank you so much, Ahmad. Thank you for your time. Thank you so much. Aisha, I guess we need to, can we include the session? If Or I We could just, have ask just one more we have question, okay, one. Yeah. Ahmad. Okay, Sean, you go ahead, and then it's Zan's turn. okay, Zan. Zishan, you can go ahead first. Okay. So my question was, based on what you just advised me, I was thinking of pursuing an MBA to sort of basically have both the technical and the non-technical side down. But with the current scope of things and how things are progressing, is an MBA worth it, or I should just focus on getting more experience in the field that would be more beneficial rather than pursuing an MBA, even if it is an executive MBA? I guess further education, I would recommend to all of you, to whoever, because I am myself, I've recently just graduated and now I'm looking, what else I need to do. So traditionally, the best option would be doing an MBA, but the downside is like you need to, leave your job for 2 years. So executive programs are the ideal suit. For example, you will be like into the industry, into the practice, what's evolving, and at the same time you'll be upskilling yourself. So in executive MBA, maybe an executive masters from LUMS as well. That's a great degree which I was part of. So they're offering a lot of things. They're like different masters in, for example, finance, there's entrepreneurship, supply chain, so healthcare. So there's a lot of stuff going on, and it's only not only important that you have done a degree which directly suits your interest. No one knows how the world is going, because I did a chartered accountancy degree. I never knew that like completing that 2 years down the line, I'll be an AI transformation lead at PwC. So the world is evolving. Try to do wherever your interests are, where it suits your personality, where love doing things. So try to find that and go for it as soon as possible. Don't waste your time. So you're saying an MBA is worth it on an upscaling level. Yeah, definitely. MBA would be a great opportunity for you. Not only in MBA, try to delve into things. Maybe in a master's program from LUMS. See, you need to do some research. What you need to do, what you like. Maybe a specific element which maybe suits your work. Maybe from LUMS, maybe from abroad if it's possible. So whatever you need to do something, that's the core thing. Whether it's an MBA or a master's program. So I was the first one who did a master's, a postgraduate degree in my whole entire firm. We have like 800 people working here. And now like 3, 4 of those students are applying for those master programs. So there is a cultural shift, and now people have seen the value when you are, able to experience that thing, meet new people, develop those relationships, and get those perspective of life. So that's really important. Right. Jazakallah again for humoring me, and thank you for this session. Thank you so much. Hi, Ahmad. I have a quick question. Firstly, thank you so much Thank you. for the session. So I just wanted to know, a lot of people, most of the people I've observed going into Big Four come from either accounting background or finance background. I just wanted to know if someone is, let's say, from a social sciences, economics background, but does have some years of client-facing project management experience in the IT industry. What kind of opportunities do they have in Big Four? Maybe you can speak more about PwC in particular. And secondly, I'm asking this on behalf of someone who is planning to pursue accounting, ACCA basically. I just wanted to confirm if it's a good time, if ACCA is still relevant or not. So answering the first question, relating to the eligibility and whether the economics degree suits it well. Traditionally, these big four firms were primarily doing the assurance and taxation work. So assurance is like auditing, those kind of things in the taxation. So we needed that, finance background perspective. But now most of these firms have developed into management consulting. So we have like a consulting wing based on strategy, transformation department. Then there is the technology implementation department. And now for those roles, which are the value adding roles, as I mentioned you as well. So we are looking for people with different perspective of life, different diverse fields.
diverse field, work well when people from different background come into a team, different perspective. So output is in an enhanced way. So recently we have like hired various people from LUMS from different backgrounds, from tech, from this economics, social sciences as well. So now there's great room here in PwC and I guess different firms as well, locally as well and internationally. So that is now become a preference of not only having people from those core finance background, but people coming from different various background. So there'll be giving that perspective in life. For example, if there is kind of a strategy or risk consulting job, which is primarily deals with macroeconomic changes, how the world evolves, econometrics. So our first preference would not be an accounting graduate, to be an economic graduate, how to create a demand model. So this is how the things are going forward. And what was your second question? Um, my second question was if accounting as a career is still, a good choice considering the kind of automation we have and the pace at which it is advancing. If someone just graduated high school and is considering doing ACCA, would you do that if you're in that position right now? It actually depends on a goal. So ACCA, it's like a globally accredited degree and great global mobility. So someone who wants to move abroad, it's great. It's like a UK degree, and people are getting good jobs while doing ACCA. But ACCA should be like a bare minimum, just a starting point. And as I mentioned before as well, you need to evolve yourself, you need to grow, and you need to do your upskilling. So if you're doing ACCA and you end up in an audit department, so you need to upskill yourself. You need to have those skills to make sure that you are not one of those who are the part of the layoff people. So that's the things eventually what you want to do. If you have interest in that field, definitely go for it because people will be working, there'll be layoffs in every field, but it's not possible that that those jobs will be like going away very soon. So ACCA is a good choice, especially if you have to move abroad. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mark, for the wonderful session and for not just answering the students' questions, but giving them such a detailed overview at the start of the session. We truly had some great insights and learned a lot from you today. And on behalf of both CSO and the student body, I'd like to thank you for the wonderful session. Thank you. Bye bye. Thank you so much, Taksha. Thank you.